So we're right on time. And welcome all of you again. Hi, Kanjal. Hi, team. Hi, everyone. So just before I begin, am I audible? Am I visible clearly? If you all can just quickly put it on the chat box. Great, great. Thanks, Kinjal. Lovely, Kinjal. Kinjal, so where are you from? Where are you joining us from? Oh, lovely. Wonderful. What about others? Please mention where are all of you joining from? Hi. Hi, Dr. Nivedita. Hello. Hello, Deepika. So I am a little unable to hear you. Dr. Nivedita, are you talking? Sorry? Yes, yes, yes. Sorry. I thought I was not able to hear you at all. No, no. Am Okay, I okay. audible to you now? Yes, yes, yes. A little, maybe a little louder if we all be able to hear better. All right. Is it okay now? Am I Yeah, audible? yeah, yeah, yeah. This sounds so much better. Great. Great. So welcome everyone again. And as you all are aware, we are here for something really, really very special and very close to our heart. Close to our heart, close to our bodies. First of all, coming here during Navratri itself, taking out time, coming here and joining us for this, a quick sharing for this talk, that itself, I think it's commendable. I think we all deserve a big clap. We should pat our backs. All of us should pat our own backs that we are right here together and we are ready to explore and learn so much about our bodies and see what's LAIQA bringing you today in our goodie bag. So, welcome everyone. And just before we jump into our topic and start talking about it, what I would want you all to do is, on this auspicious occasion of Navratri, we all, women, especially, we have so much of energy, we have so many emotions, we have so much going on in us, from our brains to our toes. We are all the time in action. So let's first, for 2 minutes, just sit wherever we are, ground ourselves, relax our bodies, and just close your eyes. I want you all to close your eyes. Just relax your all the muscles in your face, your hands, your feet, and just tell yourself that I am now ready for what's coming my way. I am ready to receive all the wonderful and beautiful things universe and LAIQA together are going to offer me. So just close your eyes, all of you. Relax, take a deep breath, a really long deep breath, and exhale. And as you exhale, just remove and exhale all the day's tension, whatever you've been thinking, whatever you've been experiencing through the day, all of it, just exhale. And when we exhale, we make space for a fresh new breath in our lungs and in our body, right? So take another long deep breath and exhale. When you feel that, yes, now I'm feeling relaxed and I'm ready to see what is in store for us today. All right. Beautiful women, beautiful energies of the goddess today. Let us explore
what exactly are we? And where does our responsibility for our own health and care lie? And this is why LAIQA is here as India's first femtech company. It is completely dedicated to women's health, women's hormone health. And when we say women's health, why are we saying women's hormone health only? Why is it that this big word hormone, is so prevalent and is so important for our health? So this is where we want to discover. So before I jump into the next slide, I want to ask you all a question. At this current moment, if I give you a scale of 1 to 10, how would you rate your health status from a scale of 1 to 10? What is your health status right now? Put it in the chat box. And I'll keep switching. मैं हिंदी भी बात करूंगी, इंग्लिश भी बात करूंगी. So please tell me अगर आप हिंदी लैंग्वेज में आपको कंफर्ट है, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्ट है या हिंदी में क्या है. बट आई विल कीप मिक्सिंग, दोनों मिला जुलू के हम लोग बात करेंगे सो दैट हम इजिली शेयर कर पाए सब कुछ. बढ़िया. थैंक यू आकांक्षा. थैंक यू कृपा. 5. Okay. Lovely. Anjali, 5. What about the rest? बाकी लोग बताइए. आकांक्षा 4. Okay. And कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है. ऐसा नहीं है कि मतलब 4 है तो अरे बहुत खराब है, 5 है तो बहुत खराब है, या अरे मैं 5 नहीं लिखना चाहती हूँ. यहाँ पे नो जजमेंट्स. यहाँ पे हम सब साथ में हैं. We all are going through all kinds of things together in life. So whatever we are sharing is going to be important today, right? So yes. So now अगर अब आप ध्यान रखिए, आपने जो भी अपना स्कोर दिया है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज हम जो आगे आपको बताएंगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये स्कोर आपका ऐसा है तो वो क्यों, राइट? लाइका क्यों यहां पर है आपके साथ? Why is it that LAIQA is so special? Why do we not want to know कि आपकी हेल्थ कैसी है? क्योंकि we care. We know that without a woman being healthy, कुछ भी हेल्दी नहीं हो सकता. हमारी फैमिली हो या हमारे फ्रेंड्स हो, हमारा वर्क हो, बिना हमारी हेल्थ के सब नीचे चला जाता है. डू यू अग्री? येस और नो? विदाउट आवर गुड हेल्थ, right? Agree? Great. So this is where LAIQA is going to step in. और वो not only आपको ये बताएंगे कि हम कैसे कैसे हम इस जर्नी में साथ में जाएं, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, बट सिर्फ बताना नहीं है, हम साथ में चलेंगे. एंड हमारे साथ जो चलेंगे वो हैं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. दीज आर आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स which have helped many women in their journeys through the entire menstrual cycle and even post that. So it is not just कि हमारा जो menstrual period है लाइफ का, सिर्फ उसमें हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, लेकिन वो हेल्थ इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल और आगे की हम लाइफ टिल whatever life we are living, हम कैसे हेल्दी रहें. And this is a beautiful team. We have doctors, we have dietitians, we have health coaches, Ayurvedic doctors. We have everyone who is important and is required to suggest you and to take you through your entire journey of good health. हम जब अपना मेंस्ट्रुअल वेलनेस की बात करते हैं कि हाउ आर वी फीलिंग, हाउ इज आवर साइकिल, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम, राइट? कोई एक चीज नहीं है कि ओके सिर्फ हमारी ब्लीडिंग हुई, हमें थोड़ा दर्द हुआ और बस बाकी सब बढ़िया. नो, इट्स नॉट जस्ट दोस 5 days. नाउ टेल मी, यू कैन ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. इसमें से what are the things that you have experienced? Have you all experienced these kind of things during your menstruation? Pain, little bit of focus and concentration में, energy, mood swings,
अपना सेल्फ कंट्रोल, water retention, isn't it? Yeah, all, most of us, मैंने भी, I think everyone has. ऐसा कोई नहीं है जो छूटा होगा, right? So these are the normal, actually the normal things that we all experience, right? So हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल क्या है? क्योंकि हमारी बॉडीज में तो रोज चेंजेस हो रहे हैं, थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कैसे बताएं वो नॉर्मल चेंजेस हैं या वो नॉर्मल नहीं है? And this is where awareness comes. कि just to be more aware कि what is normal, कौन सा fluctuation normal है, कौन सा mood या किस तरह का पेन, किस तरह के चेंजेस बॉडी में नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है. क्योंकि जो नॉर्मल नहीं है हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है. कितनी बार होता है, नाउ टेल मी, कितनी बार होता है हमें लगता है कि अरे पीरियड्स तो थोड़े जल्दी आ गए, चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव थॉट दैट वे कि कभी कभी थोड़ा जल्दी आ गया, चलो छोड़ो, या लेट हो गया, चलो छोड़ो, अरे ये तो नॉर्मल है, अरे पेन बहुत हो रहा है, मुझे तो हमेशा बहुत पेन होता है, इतने एक्ने हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, ये तो नॉर्मल है. कितनी बार हम लोग चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, बहुत कुछ जो होता है. हाउ मेनी ऑफ अस डू? आई थिंक वी ऑल हैव डन इट, राइट? किंजल, आकांक्षा, करते हैं ना नॉर्मलाइज? यस. So we all are. Yes, exactly. We all have done that. लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमें लगे वो नॉर्मल है वो एक्चुअल नॉर्मल हो. और इसीलिए टुडे आई एम हियर विथ यू along with our experts. I'm an alternate therapist, I'm a wellness coach and facilitator, and I have worked in the clinical research industry for more than 15-20 years. And I'm here to give you that little snippet of awareness कि आपकी बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि इससे इतने दरवाजे खुलने वाले हैं, so many doors are going to open कि आपको मालूम पड़ेगा कि what is happening in your body and why it is happening. So आज हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम करने वाले हैं. What is happening, how it's happening, and why is it happening in our bodies. Yeah. So let's talk real. जब हम real बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? We have a man and a woman, right? Okay. So अब बताओ, how do you feel a man and a woman are different? मतलब क्या है? हम लोगों को कभी कभी लगता है अरे यार, the men in our life, हमें ऐसा नहीं लगता है तो मेरी बात ही नहीं समझते हैं, अरे मैंने तो ये बात बोली थी कल करने के लिए, आज अभी तक किया नहीं है, 4 दिन हो गए हैं, एक साथ मैनेज ही नहीं कर पा रहे, मैं तो इतने सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, ये तो मैनेज ही नहीं करते. हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेल्ट दैट वे? चलो चलो फटाफट बताओ, एकदम सच्ची सच्ची बताना. हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेल्ट सेम? यस आकांक्षा, एग्जैक्टली. व्हाट अबाउट किंजल? किंजल, अंजलि, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू टेल अस कि हमको लगता है अरे हमारे जैसे क्यों नहीं ये लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे है ही नहीं. men are different. हाँ जी कृपा, एग्जैक्टली. सो we definitely are very different from men, but how? ओके किंजल, ओके, सो किसी से एक्सपेक्ट नहीं है, ओके, नो वरीज, बहुत बढ़िया. लेकिन ये चेंजेस, ये जो हमारे डिफरेंसेस है, ये हम एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव मेन इन आवर लाइफ, चाहे वो हमारे फादर हो, ब्रदर हो, पार्टनर हो, कल को बच्चे हो, कोई भी हो, राइट? सो देयर आर डिफरेंसेस. ये अच्छा, ये बताओ ये कौन सी मूवी है? फटाफट बताओ, मुझे पता है सबको मालूम है और सबने देखी भी होगी. कौन सी मूवी है ये? Yes, Bahubali. You can see a man and a woman. You can see the hero and the heroine. Yes, Himanshi. Hi, Himanshi. Yes. अब हमने बाहुबली तो बोल दिया, मूवी का तो नाम ही बाहुबली है, इसमें पूरा स्ट्रेंथ की बात हो रही है. नाउ टेल मी, यहाँ जो हीरो और हीरोइन है, तुम्हें लगता है कि दोनों के स्ट्रेंथ या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स या दोनों का जो पर्सनैलिटी है वो क्या सेम है? डू यू थिंक? भाई यहां तो मैंने देखा है कि देखो फोटो में दिख रहा है तीर पकड़ के खड़ी है हमारी हीरोइन, लेकिन क्या डिफरेंस हो सकता है? द मैन हैज आल्सो इज आल्सो होल्डिंग द एरोज, द वुमन इज आल्सो होल्डिंग द एरोज. तो भाई क्यों इतना डिफरेंट है इन दोनों में? इस मूवी में हमने क्या देखा? हमने देखा दैट बाहुबली तो है हमारा हीरो, लेकिन हमारी जो हीरोइन है, द वुमन, not only strength, but her main power lies in her
Mind, in the way she thinks, in the way she behaves, in the way she takes decisions, the wisdom, the wittiness, the smartness. How many of you feel? Okay, my voice is not audible. Am I audible? Am I audible, everybody? Clearly सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Okay, okay, great. Thank you so much. So, तो हमारी जो हीरोइन है वो अपनी विटिनेस, अपनी स्मार्टनेस, ये सारी चीजें यूज कर रही है, लेकिन ये कहाँ से आती है हमारे अंदर? क्या आपको लगता है that women have that extra edge of smartness and the way we use our brains, the way we, you know, how do we manage all these things? आपको ऐसा लगता है कि हम ये कर पाते हैं, इजिली कर पाते हैं, मच इजियर देन मेन? लेकिन क्यों होता है ये? Because we are made very differently. We have our energy. Finally, हम क्या हैं? We are all energies, right? लेकिन जो male energy है और जो female energy है वो बहुत अलग है. They are different. The male energy is a sun energy, which is very consistent, constant. Whereas the female energy is the moon energy. Moon हमें पता है ना? Moon के क्या होते हैं? Waxing, waning, सारे phases change होते हैं. If you actually observe, हमारे moon का cycle और हमारी menstrual cycle is exactly the same. The 28-day cycle. And moon में भी जिस तरह के changes होते हैं, the cycle, the ebb and flow, वो सब हमारे अंदर भी होते हैं. Do you agree? लगता है ना हम moon वाले ज्यादा हैं, हम sun वाले कम हैं. We have sun energy, but men are more that consistent kind, right? Fixed, focus, rational, logical. Yes, exactly. Action driven, productive, stable, assertive. Whereas women are more reflection driven. They're more fluid and adaptive. अब आप ये सोचो, when so many changes are happening in a woman, so many things, we have to manage ye bhi. Our mind is in so many directions. What do we really need? We need a balance of our energy. हमें चाहिए कि हम constantly उस energy के ऊपर ध्यान दें, and we need to keep cleansing, keep renewing, just like moon. Renew होके आता है full moon में. अमावस्या में शांत, उसके बाद renew होता है धीरे 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 धीरे. The same, exactly same happens with us, right? So, and this is where, ये तो हमें पता चल गया एनर्जेटिकली, राइट? अब बॉडी में क्या हो रहा है हमारे, राइट? दैट इज वेयर नाउ दिस इज नॉट जस्ट कहने की बात नहीं है, हम फिजियोलॉजिकली भी हमारे अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. इफ यू कंपेयर अ मेल एंड अ वुमन, क्योंकि अभी तो हमें पता चल गया है कि मेल का कैसा पैटर्न होता है एंड वुमन का कैसा होता है. मेल हार्मोन, which is a testosterone hormone, that is a main hormone, right? It has a very specific pattern through the day. Morning के time पे it comes up, by evening, night it just keeps dipping. But it's not like आज एक है कल दूसरा या पूरे मंथ में अलग अलग साइकिल, ऐसा नहीं हो रहा है. That's not what is happening. उनका सिर्फ एक डेली साइकिल होता है. Yes, in older men it does definitely change a bit, but otherwise it's a similar kind of pattern throughout their life. But in women it's very different. We have proper phases in our entire 28-day cycle, जहां पे कभी estrogen high हो रहा है, progesterone high हो रहा है, luteinizing hormone high हो रहा है, and then they're dipping, FSH high हो रहा है. This all is because you remember the creative energy that women have? क्योंकि हमें create करना है. We are the creative energies. And वो create करने के लिए we need so many permutation combination. इतने सारे चाहिए. And that is why you would have observed साइकिल के एक पार्ट में यू फील सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब सब कर लेंगे, मतलब एकदम आई एम द बॉस, मैं सब बढ़िया 10 चीजें एक साथ कर लूंगी. और कभी कभी डिप 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 होते होते आते आते यू फील लाइक अरे यार आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट that whole range of emotions and range of energy throughout your cycle? And this is what happens during the ovulation में high रहता है, where your estrogen, your progesterone, your LH, FSH, everything is high. Why? Because your body is preparing to receive a sperm and to create another human. लेकिन ठीक है भाई, नहीं हुआ तो डिप हो गया.
फिर वापस शुरू होगा. So all these things, so these are fluctuations which are normal fluctuations. You remember we spoke about what is normal and what is not. This is what is normal. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है. लेकिन जब ये ग्राफ हमारा बिगड़ता है कि जब हाई होना चाहिए तब लो हो गया, या कुछ प्रोजेस्टेरॉन लो होना चाहिए वो हाई हो गया, या एनीथिंग हैपनिंग विद द हॉर्मोन्स, सब जब गड़बड़ होते हैं, दैट इज वेयर our bodies start giving us signals for different problems. And today, which is why we want you all to be aware of how your hormones are making you dance and how we are going to go forward in understanding what happens when that harmony or balance is missing, right? So, and this is where what LAIQA does is it brings to you beautiful things, and it's a surprise. I'm not going to crack it right away. LAIQA जो आपको देगा, it is basically giving you fuel to keep our hormones and our energy well balanced and completely harmonized, right? So through air, breath exercise, activity, grounding, sunlight energy, vitality, through water and food, because it gives you hydration, nourishment, and good sleep. So all of it. ये सब कुछ, क्योंकि ये हमें सब कुछ चाहिए, हम एक चीज से नहीं कर सकते. कैन यू से कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत, मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरे हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, मैं सिर्फ अच्छा सा, मैं बस एक डाइट ले लूंगी और बढ़िया हो जाएगा, मैं कीटो डाइट लूंगी और सब अच्छा हो जाएगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. सिर्फ एक डाइट से, ओनली डाइट विल नॉट हेल्प. यस इट इज इंपॉर्टेंट, फूड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में ये जो बाकी चीजें हमें चाहिए, these are the things. It's like a package deal. Just like the universe, our body also needs all of it together. And this is where we are going to give you, we're going to bring you the surprise after some time. And that's what we are going to give you. Okay. So now moving on to the main topic. क्योंकि आज हमारा topic है PCOS, right? Tell me, out of all these 15 symptoms, stress, acne, thinning of hair, constipation, all of it till vaginal dryness, how many of you have experienced, and how many of these symptoms have you experienced? You can just quickly write the numbers. कि क्या है 1 2 5 7 9, जो जो आपको एक्सपीरियंस होता है, आप वो सारे बस नंबर्स लिखिए. Yeah, exactly. Yes. So there are a lot of these symptoms that happen, and these are the ones which now become very important for us to understand कि हमारे body में exactly PCOS की वजह से क्या हो रहा है. And this is where I want to welcome our expert panelist today, Dr. Nivedita. She's a leading Ayurveda specialist and she has 17 years of experience, which means कि आपको जो अभी इतना rich information मिलने वाला है ना, it's going to last a lifetime and it's going to be life-changing for you all. So over to you, Dr. Nivedita. Thank you so much, Deepika, and thank you so much for starting this wonderful webinar. And really, to start with, I would like to tell you first of all of you, I am into practice of healing since last 17 years, and believe me, there were so many females who have faced PCOS. PCOS इतनी common हो गई है आजकल कि every second or third girl have it. तो आज इसी के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ. तो because PCOS itself, it's a there's a difference between PCOD and PCOS. PCOD means polycystic ovarian disease, whereas PCOS stand for polycystic ovarian syndrome. बट इसको समझने से पहले, ये एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है, इसको समझने से पहले आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए. So for that, this slide is important, in which you can see that as we know, all of us, we are facing menstrual cycle, and ये जो menstrual cycle है, इसके different phases होते हैं, right? We already know that we are, every month our uterus prepare itself to conceive, and if conception occurs, then it will convert into pregnancy. 9 महीने तक आप pregnancy को, आगे तक लेके जाते हैं. बट अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो आपके मेंसेस आ जाते हैं. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. दैट इज बेसिकली, यू कैन से, मेंस्ट्रुएशन फेज, जब आपको मेंसेस शुरू होते हैं. देन इट इज
ओवुली दैट मीन्स फॉलिकुलर फेज, जब आपको धीरे धीरे आपके फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर हो रहे हैं, ऑन 14th डे वो प्रॉपरली मेच्योर हो जाता है, और उस समय वो ओवम, जो आपका मेच्योर्ड ओवम है, वो रप्चर होता है, ओवरीज से बाहर निकलता है, और फैलोपियन ट्यूब उसे कैच करती है एंड इट ट्रेवल्स टू योर यूट्राइन वॉल। वहां पे अगर कोई स्पर्म आ जाता है, देन इट इज गोइंग टू बी, यू कैन से, द fertilization may occur. If it is not happening, then again it is going to, you'll again face menstruation. So luteal phase आ जाती है आपके 14 दिनों की. So this again, as you have mentioned, moon से काफी represent करती है. जैसे ही पूर्णिमा आती है, your again you start with the, जो changes आपके यूट्रस में आते हैं वो आने शुरू होते हैं. But this all everything is controlled by different hormones, as we already know. That is FSH, LH, prolactin, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. कुछ हॉर्मोन्स आपके ब्रेन में जो पिट्यूटरी है वहां से, दिस इज बेसिकली यू कैन से मास्टर ग्लैंड, एंड बेसिकली मास्टर ग्लैंड से जो आपके हॉर्मोन्स निकल रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके यूट्रस को, आपकी ओवरीज को. ओवरीज में फॉलिकल मैच्योर हो रही हैं, एंड मैच्योर होने के बाद में ओवरीज से भी डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंड ऑल्सो टू टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट फेजेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं. कोई हार्मोन हमेशा एक जैसे स्टेगनेंट नहीं रहता है, एंड समटाइम्स इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट विद योर फेज, विद योर मेंस्ट्रुएशन फेज, ऑल द हार्मोन्स आर ऑन एट द जीरो लेवल, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज होते हैं, देन डिक्रीज होते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ फ्लक्चुएशन इन योर बॉडी व्हिच इज हैपनिंग ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस, इसीलिए आप डिफरेंट फील भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने मेंस्ट्रुएशन फेज में होते हैं, आप पेन में होते हैं, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, काफी ज्यादा आपको स्ट्रेस हो जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, यू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक, वांट टू वर्क इन अ डिफरेंट मैनर, वांट टू डू put your energy into each and everything. But slowly and gradually, जैसे ही आप luteal phase में आते हैं, again you started feeling irritable, stressed and all. So अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है पीसीओएस और उसके कॉजेज क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसीओएस इट मींस देयर इज मल्टीपल सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इट मींस आपकी ओवरीज में जो हर महीने फॉलिकल डेवलप होना चाहिए था, एक ओवम में कन्वर्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज एन नंबर ऑफ रीजंस. मतलब आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो फॉलिकल है वो मेच्योर ही नहीं हो रहा है. एंड दिस साइकिल रिपीट इटसेल्फ, कई सारी एनोवुलेटरी साइकिल्स रह जाती हैं, और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें आपको पता चलता है योर ओवरी हैज मल्टीपल सिस्ट इन इट, एंड दैट इज व्हाई दैट इज हाउ वी जनरली गेट टू नो कि वी हैव पीसीओएस. उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, राइट? सो टू गो विद द रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स इफ इट इज देयर इन योर पेरेंट्स के, आपको मदर या नानीज, दादीज, बुआज, इनकी आपको हिस्ट्री में अगर पीसीओएस मिलता है, और सम अदर मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स लाइक डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, और एनी अदर प्रॉब्लम, इफ यू आर लुकिंग एट, तो उसकी वजह से आपको भी, आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओएस होने के. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर कॉजेस, इन्वायरमेंटल कॉजेस होते हैं, प्लास्टिक का यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा होता है, या ऑफकोर्स, of course, if there is some lifestyle issue, lifestyle as in, you can say, you are not eating healthy, you are having too much of junk fast food, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज जो आप इनटेक कर रहे हैं उसे बर्न नहीं कर रहे हैं, then it is going to cause problem, right? So we need to understand there are several causes, but the root cause, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो हम बात करते हैं कॉज की. मेन कॉज क्या है? तो इन सब चीजों का जो मेन कल्प्रिट है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको ज्ञान देना चाहती हूँ. आई नो देर इज ऑलरेडी टू मच ज्ञान आई हैव गिवन, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि जो भी आप खाना खाते हो, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज शुड पेनिट्रेट इनसाइड द सेल्स सो दैट इट कैन बर्न इनटू एनर्जी, और आपकी एनर्जी आपके सारी चीजों को काम करने के लिए जरूरत होती है. इवन इफ यू आर स्लीपिंग, even if you are at rest phase, your heart is beating, your brain is working, your kidneys are functioning, everything is done by energy, right? और एनर्जी आपको ग्लूकोज को बंद करके ही मिलती है. बट इंसुलिन का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है. अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है,
और प्रॉपरली वर्क कर रही है तो वो ही आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पेनिट्रेट करवा सकती है। बट ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल, एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा, आप बहुत एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, खाना बहुत ज्यादा खराब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कारण है आपकी ओवरीज पे बल्कीनेस लाने का, यानी ये डायरेक्टली इंसुलिन जो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में हो जा रहा है, बन जा रहा है, देयर इज अ लॉन्ग फिनोमिना नेम्ड एज लॉक इन की फिनोमिना। तो अगर ये लॉक इन की फिनोमिना, insulin is a key and it has to open the lock of the cell wall, then only glucose will penetrate inside. But if insulin is not working properly तो ग्लूकोज तो अंदर जाएंगे नहीं, और आपकी एनर्जी लो पे लो होती जाएगी, बट आपकी जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड में बढ़ता ही जाएगा। एंड दिस इंसुलिन, इट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन जो ज्यादा बढ़ी हुई है आपकी ओवरीज पे लगातार काम करेगी और ओवरीज को बल्की बनाएगी, and it may lead to PCOD or n number of medical issues, even diabetes, right? So this is known as insulin resistance, and this is something which, the main reason of any medical issue। आपको इंसुलिन पे काम करना ही है, अपने डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी एनर्जी जो आप बर्न करते हो ऑन रेगुलर बेसिस पे काम करना ही है। अदरवाइज इट मे लीड टू, दिस इज द मेन कॉज, राइट? सो इफ it is there, it may lead to several medical issues. Yeah, absolutely, Dr. Nivita. You're absolutely right. And in fact, at this, I want to ask, our participants कि आप में से क्या अभी तक किसी का डायग्नोसिस हुआ है पीसीओएस का, या आपको मे बी अभी लगता है कि शायद मुझे पीसीओएस है, और आर यू अवेयर ऑफ इट? Yeah, I am open to take any questions. You, Yeah, yeah. all of you And can, and yes. please keep asking questions in between. हम questions बीच में आपके जरूर पढ़ के और उसको आंसर हम करेंगे। Right. ओके I guess हिमांशी। Miss Kinjal have asked this question. अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करें तो पीसीओडी और पीसीओएस रिवर्स हो सकता है या नहीं? So right, Kinjal, I must tell you, you need to understand that अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे मैनेज, उसको ठीक कर लेते हो तो you are working on the root cause, and according to Ayurveda, निदान परिवर्जन अगर आप कर लेते हो, रूट कॉज एनालिसिस और उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो, you can manage each and everything. So yes, if and that can be done only by modification in your lifestyle, let me tell you. If it is on the higher side, अगर बहुत ज्यादा mismanaged हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो maybe you need some Ayurvedic interventions, some Ayurvedic medications as well. But by incorporating some lifestyle modification, of course, you can manage your things. एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ आवर प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स ने ये, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिर्फ मेडिसिन लेके नहीं कर सकते हैं हम, हाँ, रिवर्स। सो इट इज सो मच मोर देन जस्ट टेकिंग मेडिसिन। इट इज नॉट जस्ट, जैसे डॉक्टर निवेदिता ने बोला है कि इट्स नॉट जस्ट कि हमने एक पिल ले लिया और बढ़िया हो गया सब, ऐसे नहीं होता। you देयर know, आर मल्टीपल Deepika, फैक्टर्स। yes, I must tell you, मेडिसिन जो होती हैं, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए, तो जनरली ओसीपीज दी जाती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो जनरली दे आर गिविंग ओसीपीज एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बेसिकली दे आर, you can say, this is something which is, externally you are providing your hormones, right? It is your body is not producing, and that is why you're externally providing it. So sometimes when you're practicing this for long, your own ovaries forget, creating it, forget secreting it. So this is something which start causing problem. तो बिकॉज इट इज आपकी अ बॉडी नेचुरल भूल जाती प्रोसीजर, है। राइट डॉक्टर निवेदिता? ये जो नेचुरल Right. है तो वो नेचुरली ही हील होना है, हमें हमें बिल्कुल। और नेचुरली आपने, बैलेंस करना है। जी जी जी, हर किसी को इसलिए नहीं है बिकॉज जनरली लाइफस्टाइल सबकी खराब नहीं है, जिनकी खराब है जनरली उसी को, तो कारण तो आपको पता है लाइफस्टाइल है, तो काम भी आपको उसी पे ही करना है, या राइट? like Himanshi is asking, then how can I treat this? And in fact, और लोगों ने पूछा, गुनगुन ने पूछा that which is more dangerous, PCOS और PCOD? गुनगुन, राइट dangerous, राइट। I know, मतलब सभी कुछ dangerous है, any kind of नहीं नहीं, imbalance. let me tell Yeah, you, Deepika, we yeah. already know PCOD stands for polycystic ovarian disease. It means it is one disease which is limited to ovary. बट अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, इट मे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लिकेशंस, Right. एंड वो फिर पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। पीसीओएस मींस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट मींस PCOD is one disease and PCOS is the group of disease which is
बेसिकली आपको अगर पीसीओडी को मैनेज नहीं किया तो डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकता है और सेवरल अदर मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज पीसीओएस. इट इज एब्सोल्युटली. मोर डेंजरस, राइट? या उसमें कितनी सारी चीजें लाइक यू मेंशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम और बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है. सो अगर एग्जैक्टली. स्टार्टिंग में ही हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, that is where we have cracked it and we know ki at least we can stop it to develop to go in a bad direction, right? And Himanshi, राइट. yes, we are going to answer this question for you, then how I can treat this. This is exactly why we are here. Akinjal is asking कितने टाइम में पीसीओडी से पीसीओएस हो सकता है? Dr. Nivedita. It's just like, you are asking that, if I have diagnosed with pre-diabetes, मैं कितना मीठा खाऊं या कितने दिनों तक मीठा खाऊं जब मुझे डायबिटीज हो जाए. Right. You're getting me? So you are at step one, you're already on the verge of it. If you're not managing it, of course, in very short time of period, you can, you can go to this thing. So you need to understand कि थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि हम अगर बिल्कुल. पीसीओडी से डायग्नोस हो गए, इट मीन्स ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आपको मैनेज वही करना है. Otherwise, once it becomes complicated, it may Yeah. cause several issues, right? करेक्ट. और हमारे जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हमारा लाइफस्टाइल सच में बहुत चैलेंज्ड है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट द प्रोसेस. कि जिसका कुछ महीनों में होना था, वो शायद कुछ हफ्तों में ही चीजें बिगड़ जाएं. सो बिगड़ने क्यों दें? हम एक स्टेज पर ही, फर्स्ट स्टेज पर ही अगर हम उसको मैनेज कर लें. एंड यस, एंड गुनगुन हैज सेड, okay, no, before Gungun, Himanshi, I think mentioned. Second, sorry. Yeah, Himanshi is saying that her periods have also got disbalance. Gungun is saying I have PCOS, but don't have any things like thyroid, sugar. How can I manage? But मेरे को periods 15 days में तक भी last करते हैं. This is the only problem I'm suffering. So yes, this is Yeah. definitely a sign of something not going right. Right, Dr. Nivedita? राइट. आई मस्ट टेल यू, देखो आपकी बॉडी ना आपको डिफरेंट साइंस देती है, डिफरेंट सिम्टम्स देती है, अब अलार्मिंग कंडीशंस देती है इन विच यू नीड टू अवेक. अलार्म्स है, बजना है, और आपकी आपकी आंखें खुलनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है. बिकॉज वॉट इज नॉर्मल until and unless we know that, we'll not be able to identify what is abnormal. अगर आपके पीरियड्स 15 दिनों तक आते हैं, इट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल. इट मीन्स, सी, जनरली इट शुड बी maximum for 7 days, ठीक है, minimum for 2 to 3 days, maximum it could be 9 days as well, that is okay. अगेन फ्लो कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है. दिस इज अ लेंदियर टॉपिक, मैं उसके बारे में कभी और हम डिटेल्ड Yeah, वेबिनार yeah, लेंगे. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या नॉर्मल है. 15 days इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल. एंड तभी हम डिफरेंट वे में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू. हमारे डिफरेंट क्वेश्चनर्स होते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है. तो हम almost 100 questions we try to ask, to analyze what is आपका menstrual wellness score क्या है. Different questions हम पूछ के yes, ही समझते हैं. तो this is not something which is normal absolutely, and you need to take yeah, care of it. You need to do some hormonal profiles. आपको सिर्फ इसके ही नहीं, कई सारी चीजों के बारे में और भी जानना चाहिए कि आपको हिरसुटिज्म तो नहीं है, आपके हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, सडन वेट गेन तो नहीं हो गया है आपको. देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन. एंड आपको absolutely. एनालिसिस करके, अल्ट्रासाउंड करके, ब्लड टेस्ट करके आपको अपनी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स वी स्किप दैट थिंग. अरे बाकी तो कोई चीज नहीं है, देर इज नो पेन, देर इज इवन sometimes people tend to take pain normal as well, like there is, Right, even if right. you are in a pain during menses, so you generally tend to think कि ये तो normal चीज है, हर किसी को Yeah, होती है. But no, it's not normal. yeah. So वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, we will take it someday. Absolutely. That itself is like another webinar, I think. और इस पॉइंट पे मैं Right. ये जरूर बोलूंगी टू ऑल ऑफ यू कि रिमेंबर कि जब भी हम बात करते हैं अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ की, डोंट टेक ओनली वन फैक्टर इनटू कंसिडरेशन. मतलब आप सिर्फ ये मत देखो कि ठीक है मुझे बस पेन हो रहा है. नो, व्हाई वी आर शोइंग ऑल दीज थिंग्स, हमने वो क्यों सारे सिम्टम्स दिखाए हैं. दिस इज टू It's बेसिकली इन्वोक समथिंग, कि अच्छा मुझे क्या ये भी फीलिंग हो रही है, क्या ये भी एक्सपीरियंस हुआ है. बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे मोर देन 2 या 3 सिम्टम्स होते हैं. It is never restricted to just one. Is that right, Dr. Nivedita? Isn't it? कुछ ना exactly कुछ होगा, right. just that हम उसको identify नहीं कर पाते हैं. And that is where we are going to help you, all of you, कि हम कैसे identify करें.
कि वो एग्जैक्टली पीसीओएस है या किस तरह का इम्बैलेंस हो रहा है. एंड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा लाइक कैन पीसीओएस बी रिवर्स विदाउट पिल्स, एंड if yes, how? And I think the answers are right there in front of you. Dr. Nivedita, you can in fact explain a bit. Yes, so can, like, let me tell you, as I've already mentioned, if you are taking pills from the outside, as I've already mentioned, your ovaries, or if you're even if you're taking thyroid pills, or if you're taking, pancreas आपका properly insulin resistance हो गया, pancreas आपका properly work नहीं कर रहा है, तो उस समय अगर हम medicines लेना शुरू करते हैं, insulin के injections लगाना शुरू करते हैं, you need to understand your body forget to make it. So it's important to change your lifestyle and stimulate your organs, stimulate your glands, so that it itself starts secreting different hormones. So this is important, and you can do it, you can manage it properly without any medication, but of course it is going to be a long process, because आप कहाँ हो, किस जगह पे खड़े हो, that is important. So to analyze that, only then we will be able to mention कि कब तक, कैसे, कितने दिनों में हो पाएगा, but yes, it is possible, that is for sure. डेफिनेटली. और जब आप पूछते हैं कि हम ये कैसे सब कुछ मैनेज करें, कैसे ठीक करें, सो that is where our surprise is going to come now, because this is the information that is important for you to know, to understand कि हम जो आपको दे रहे हैं वो हम ऐसा क्यों दे रहे हैं, what is that Right. surprise that we want to give you, right? So this was Yes. the basic information that you all need to know. Yes, Avantika. Avantika is saying, ma'am, I have weight issues. Absolutely, Avantika. These are all things that are sure signs of so many things happening in our bodies, right? Like we said, weight gain ho raha hai. Yes, the weight gets stuck. Absolutely, Kinjal. Weight gets stuck at a point. The abdominal fat, the visceral fat that after a certain age, many women experience. So all these things I must are. tell you in this, I must want to add into it. Sometimes even if we don't have any medical issues, still your weight is raising, it's rising. Yeah. So sometimes आपको ये समझने की जरूरत है, even if you don't have any severe medical issues, still if you are under stress, stress is directly proportional to weight gain. रीजन बीइंग, Yeah. जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो इंक्रीज होने लगता है. And this is going to work on your ghrelin and leptin hormone, which is responsible for the appetite and for the satiety feeling. मतलब आपको भूख कितनी लगनी है, कब आपको इतना लगना है कि अब Right. हो गया, अब मुझे और नहीं खाना है, इन hormones को disturb कर देता है cortisol, which is the stress hormone. And when you are in stress, as it is disturbed, you tend to eat more and forget to stop eating. तो उसकी वजह से आपको continuously weight gain होता जाता है, और जब आपका वेट गेन हो जाता है तो आप फिर से स्ट्रेस में आ जाते हो कि अरे भाई मेरा तो वेट गेन हो गया. तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलती रहती है, एंड यू जनरली गेट ट्रैप्ड इनटू इट. सो द आइडिया इज टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, हर जगह से जो भी कारण है, चाहे वो आपका वेट गेन है, चाहे आपका एक्सरसाइज ना करना है, इजी अच्छी डाइट फॉलो नहीं करना है, या स्ट्रेस में रहना है, फ्रॉम एवरीवेयर यू हैव टू टारगेट दैट. एब्सोल्युटली. लाइक श्वेता ने भी पूछा, मैम मुझे 40 डेज का मंथली साइकिल है, क्या ये नॉर्मल है? किरण बोलती है मैम सिर्फ 2 डेज आते हैं मेरे पीरियड्स. दीपा इज सेइंग 3-4 मंथ्स में पीरियड्स आते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि कहीं ये इट्स लाइक सेइंग कि 40 डेज में मून अमावस्या से पूर्णिमा हो रहा है. बात वही हुई, राइट? सो दैट मीन्स समवेयर something is not going right in the body. इसीलिए वो ठीक है. We do I think डॉक्टर निवेदिता also said कि ऐसा नहीं है कि एकदम ऑन डॉट 28 होता है, ठीक है, 30-32 हो जाते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली पीरियड्स के इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं कि लॉन्गर पीरियड्स, या द होल व्हाट यू कॉल द डिफरेंस बिटवीन, और अदर जस्ट एक मंथ में आया से 28 डेज में, दूसरे मंथ में आ गया 40 डेज में, किसी मंथ में 2 दिन, किसी मंथ में 7 days. So that means there is something really not going right inside, right? So these are the things that we have to find out. Deepa asks, how can I stimulate ovary naturally? मुझे बिना medication के नहीं होते. Okay. So Dr. Nivedita, she's asking about ovarian stimulation. You need to understand, see, without medication के ना होना, it means, see, there is a, as I have mentioned, your menstrual cycle, it is generally regulated by different hormones, which is secreting from either your
you can say your pituitary or from your ovaries itself. अगर कोई भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से आपके जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुएशन को लाने के लिए वो प्रॉपरली आपकी उस पीक पे जाके ड्रॉप नहीं होते, जिसकी हम्म, वजह से आपको मेंसेस नहीं आते। तो जनरली एलोपैथिक मेडिकेशन में क्या किया जाता है, आपको 5 डेज मेप्रेट या फिर कोई भी प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन दी जाती है जो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को एक पीक पे लेके जाते हैं। एंड व्हेन यू स्टॉप इट आफ्टर 3 days यू गेट अ मेडिकेशन बिकॉज वो जनरली एकदम सर्च पे जाके डाउन होता है। सो दिस yeah, इज व्हाट योर बॉडी शुड डू ऑटोमेटिकली। तो अब आपके केस में क्या हो गया है कि बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं एंड दिस इज नॉट that you generally every month you try to induce your menses and you start have it. yeah, This is not normal at all. And to normalize it, since the starting of the webinar we keep on saying कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। एंड समटाइम्स दिस एग्जांपल आई यूज टू गिव एवरी टाइम कि अगर mm, गड्ढा है और उसमें पानी है और आपको गड्ढे को सुखाना है, राइट? तो अगर पानी कम है तो ऑफ कोर्स यू कैन mm, लीव इट फॉर फ्यू डेज लाइक सन के अंडर छोड़ दोगे और ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी यू कैन से ड्राई हो जाएगा। बट अगर पानी ज्यादा है तो यू हैव टू टेक आउट सम वाटर, यू हैव टू पुट लिटिल मड इनटू इट एंड यू हैव टू लीव इट फॉर सम डे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है तो आपको अपनी डाइट पे भी काम करना है, एक्सरसाइज पे भी काम करना correct, है, आपको आयुर्वेदिक होम रेमेडीज भी लेनी है या आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी लेनी है। डोंट गो ऑन एलोपैथिक मेडिकेशन स्पेशली हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बिकॉज उसमें yeah, आपकी जो ओवरीज थोड़ी बहुत भी काम कर रही है वो it will stop forget about the main yeah, function here. yeah. And yes, Shweta, पता कैसे चले पीसीओएस से? वो पता चल जाएगा when your health, you will feel it in your body कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपके cycles normal हैं, and all these symptoms which are worrying you till now have disappeared. And उसी के लिए, as I told you in the beginning also, we have a beautiful surprise. लेकिन अगर वो surprise लेना है हमें, तो also I need an answer from all of you. आप सब ने हमें बताया कि what are the challenges you're going through, and I know it's very difficult to deal with that. I could feel, आप लोग बस लिख रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है that how much of pain there is behind that. Now tell me, how many of you are ready to actually work on this? कि बस कुछ करना है ताकि हमारी cycles बढ़िया हो जाए and we are in our optimum health. How many of you want that? Because that is going to be the deal breaker today. Type me if you want to reverse all the things that you are going through. You want to just, ऐसे लेकर बोलते ना वो कचरे के डब्बे में फेंक देना है all the problems, जो कुछ हो रहा है वो कैसे हटाना है हमको. Awesome. श्वेता, हिमांशी, कृपा, lovely. वो मी सुन के ना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. Awesome. And this is where we are going to now come to a very big surprise. And लेकिन उस सरप्राइज से पहले हम ये बताते हैं कि और भी कोई है जिसने वो सरप्राइज हमारा लिया है एंड उस सरप्राइज से क्या मिला. That surprise is basically our beautiful program that we are going to offer you all, which Radhika took from us. Radhika had come to us with a lot of issues with her periods, with so much pain. She used to cry, like phone पे जब हमारी टीम के साथ उसने बात करी, she used to cry कि इतना पेन होता है मुझे, मेरा weight stuck हो गया है. So many things were happening. Thyroid hormones, उसके they were haywire. PCOS diagnosed हुआ था, very painful periods. All these issues she came with. And guess what? She just gave 3 months to herself. Dedicate किया कि yes, these 3 months I'm going to give myself. It's like लाइका के हाथ में मैंने अपनी health अब रख दी है Deepika, and I'm I going to feel you need dedicate to myself. present your screen. So sorry, you need to present your screen. Okay, 1 second. Is it presenting now? Okay, so yes, and that is where she saw results. She lost almost 15 to 18 kgs. She lost. She has been maintaining her weight since then. उसका PCOS reverse हो गया है. Periods have become less painful. मतलब उतना ही जो थोड़ा बहुत discomfort, which is very natural to have, that is maintained.
thyroid hormones have been normalized, and this is without any pills, zero pills. This is only through lifestyle intervention. और जो बिग सरप्राइज है जो मैं भी बताने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या हम देंगे, what is the surprise LAIQA is going to give you, that is what has transformed Radhika today. So how many of you want to be the next Radhika or next Kinjal and next Himanshi, you know? How many of you want? Do you want the reversal of all these problems? Yes, absolutely. And this is where we are going to come to the program that LAIQA offers, which is a hormone, completely rewiring program. Or hamara program is like patented program hai wo hamara. This is something that nobody, no other femtech company, no other diet and nutrition company or any other health company has. Because ये हमारा एक बहुत properly chalked out एक path है जो road दिख रही है ना, this is the road to your health, which is a 3-step road. We start with, as we said, सबसे पहले identification. You know, 1 out of 5 women have PCOS, but 90% of them go undiagnosed. उनको पता ही नहीं है कि PCOS है. And that is where we have developed 2 beautiful quotients. We call that lifestyle quotient and the menstrual wellness quotient, जिसमें there are almost hundreds of questions. बहुत detail में we delve into your lifestyle. There'll be a lot of questions which will be asked about, say, when you talk about the menstrual wellness quotient, menstrual pain के ऊपर आपका pain tolerance कितना है, आपकी intensity क्या है, what do you feel, how are your cycles, what do you feel during the cycles, the mood, concentration, focus. They're like hundreds of things that are going to be asked. And of course, your lifestyle quotient also, your diet, your activity, everything under the umbrella of lifestyle. And that is what is the first step of this LAIQA 1, 2, 3 approach, जहां पे हम पहले identify करते हैं कि exactly problem कहाँ हो रही है, कहाँ पे हमारे hormones का balance जा रहा है, कहाँ हमारी harmony बिगड़ रही है. And then when we know कि okay, this is the problem, and it is going to be person specific. Every result of this quotient, this questionnaire is going to be different for everybody. मेरा जो क्वेश्चन होगा और किसी और का क्वेश्चन होगा वो अलग होगा. सो जो रिजल्ट और जो गोल्स मेरे लिए सेट होंगे वो तुम्हारे या किसी और के गोल्स के से totally different होंगे, right? So which is why it is a very personalized kind of plan that we give. And after we know we have identified what is going wrong, that is where we use a health coach from our team, a nutritionist, a dietitian, a doctor. All of them are going to come together and plan out a beautiful program for you, jahan pe diet, fitness, yoga, Ayurvedic interventions, nutraceutical, absolutely healthy and natural way of dealing with the issues that have been identified in step 1. Step 2 में हम वो करेंगे. And it doesn't end at that. ये नहीं कि हमने बस diet दे दिया और exercise दे दी और भाई आप कर लो, ऐसा नहीं है. There is going to be constant, regular follow-up, tracking होगा. There will be call and chat support. हमारी community build होगी, एक WhatsApp group होगा जहाँ पे you can keep asking your questions. जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके daily ऐसा नहीं है कि सिर्फ starting of the program और end में. Every day you have something, you ask. The doctors, all the experts are going to be there on the group to support you. And this is where we stand apart from any other company. And you can see, we are just sharing. ये तो मतलब बहुत ही, it's like a tip of the iceberg. This is how it looks. जैसे आपने देखा sleep, ये sleep का questionnaire है, where we are trying to identify क्या आपका sleep pattern है. Occupational stress के बारे में questions हैं. Perceived stress, behavioral changes, right? So मैं एक करके individually नहीं जाऊंगी, but I'm sure you all are able to understand that what exactly we are trying to show through this. So this is how it's going to be. ये तो बहुत थोड़े हैं, ऐसे hundreds of questions आपको आएंगे. So imagine the kind of data we are going to collect, जिसकी वजह से हम आपको एक plan दे पाएंगे. And so coming to this plan, this is a hormone balance builder program with 90 days PCOS challenge, जहाँ पे, as you now know, the 3-step process हमारा 1, 2, 3 program, जहाँ से हम targeted plan आपके लिए बनाएंगे. And this is going to help you go further
better version of yourself, the best version of yourself that you can ever imagine is going to emerge after this. And इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? I've already told you, like lifestyle menstrual wellness assessment है, Ayurveda assessment है, mind body analysis, dietitian consultation, the Ayurveda doctor consultation, menstrual phase based diet plan. हर एक phase, जैसे आपको डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि why every phase is different. So अगर phase अलग है तो उसका डाइट भी तो अलग होना चाहिए. सब एक जैसा क्यों होगा? हमारी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगी हर एक फेज में. So everything will be phase synced, your menstrual phase synced, everything, even your exercises during your menstrual cycle. जब आपके menses हो रहे हैं तब आपके जो exercises होंगे that probably would be different from what is happening during ovulation, because तब आप बहुत energetic हैं, but at the same time maintaining कि नहीं, कहीं से भी dip नहीं होना चाहिए. There has to be a balance and harmony, right? And yes, as जैसे हमारी ये second row में आप देख रहे हैं, you have consultation with a gynac on Ayurvedic discretion, LAIQA's premium sanitary napkins, which you're going to get along with this package. Seed cycling, how to use seeds, किस तरह से incorporate करें so that you feel better through you know the good proteins that you get. And of course, the progress tracker every month. And after this, you will achieve proper weight management, overall well-being, overall menstrual health. और menstrual health अगर better होगा, hormone levels better होंगे, तो automatically आपकी energy, आपके digestion, gut health, metabolism, sleep, hair, all of it will just come to the optimum level. जहाँ पे normal fluctuations होने वो होंगे, but no imbalance, no abnormality. And this builder program right now, we are giving you for an amazing discount. It's a 35% discount. From 12,000, we have slashed it to 7,800, and it is just a festival special offer that we are giving you. This is not going to stay forever. ये हमारे आज के लिए, this is maintained. If you register today, right now, the code is right here, left side of the screen. अभी आप इसको scan करिए. Pay up. You can just pay 1,000 rupees to block your seats today. And after this workshop, it's going to go back to 12,000. So trust me, it is nothing. 7,800 rupees actually for 3 months is nothing. हम 2 से 3,000 rupees ऐसे ही कितनी सारी चीजों में खर्चा कर देते हैं अपने मंथ में, एक मंथ में, खाने पीने में, ड्रेस खरीदने में, so many things. Imagine you think of an investment. It's like an FD with such great return on investment. ये आपका वो investment होने वाला है. It's your health you're getting back for just 7,800. Rather than for the rest of your life, you keep buying pills and medicines, spending lakhs of rupees. And actually, it's not going to be 1,000, right? Dr. Nivedita, isn't it? It's not going to be thousands of rupees. It's lakhs of rupees that you will end up spending on your health. Exactly. Yeah. So just imagine lakhs versus 7,800. It's actually nothing. अगर हम सिर्फ एक डाइट प्लान भी लें एक reputed dietitian से, उनका भी 3 months का easily 12 to 15,000 तो ऐसे ही होता है. अब आप ये सोचिए, आपको यहाँ 7,800 में not only diet, you're getting doctor's consultation, you're getting a health coach, you're getting exercises, everything possible जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है. You're getting in one platform. आपको इधर उधर 4 लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है. Everything will be here. So, how many of you now tell me would want to go for this? We have EMI plan also available. अगर आपको Kinjal is asking, in 90 days, are you sure, ma'am, that my PCOD and PCOS reverse? Kinjal, you will definitely see health benefit. Within the first month, you will start seeing difference. In fact, we have a money back guarantee for 15 days. अगर आपको बिल्कुल नहीं हुआ effect. लेकिन with the promise that you are going to follow to the T. मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर 15 days में कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला. नहीं, अगर आप एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज फॉलो करें जो भी आपको दिया गया है, trust us, you will see. I have also taken this plan. I have seen results.
सो इट्स नॉट पॉसिबल कि रिजल्ट ही ना हो, आएगा। चुटकी में कभी कुछ नहीं होता है। इट इज स्लो एंड स्टेडी, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आप वेट भी लूज करना चाहते हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि मैं 2 दिन में 2 किलो वेट लूज कर दूंगी? ऐसे नहीं होगा, राइट? सो यू हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी सो दैट यू लूज इन अ हेल्दी वे। सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपके वेइंग स्केल पे कितना वेट है, इट्स अबाउट हाउ मच फैट यू आर लूजिंग, हाउ मच ऑल द फ्री फैटी एसिड्स इन योर बॉडी। हम फैट लूज कर रहे हैं, हम इंच लॉस कर रहे हैं, दोज आर विच आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज आर गोइंग टू अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म। जो मैम ने इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट बताया, ऑल दिस इज लिंक्ड। इफ यू हैव हाई फैट परसेंटेज, it affects your insulin levels as well. And yes, so how many of you are ready to do that? Because we have this, and क्योंकि नवरात्रि के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल आने वाला है। What is the festival which we all love? Diwali. Diwali. We have a very special plan for Diwali also. We have a great Diwali detox plan that we are going to give you right now, which is the dhamaka of Diwali, the double dhamaka, where you're going to reset and reboot your hormonal system. And trust me, the kind of things you're going to gain out of it: radiant skin, gut function, hormone cycle, increase in it, bahut kuch. Everything is going to be amazing. And this is 1 month plan, which is going to start from 7th of November. And it is costing you 3,000 rupees. Again, totally slashed, 50% discount. You can just pay 500 rupees to block your seats. Again, only valid for this workshop. So now how many of you are ready? Come on, come on, come on. I want to see you all quickly registering. 1,000 rupees for hamara 3 month ka PCOS reversal plan. And we have Diwali detox, 500 to block your seats right away. Right away, because this is going to go away. ये फिर इस वर्कशॉप के बाद नहीं आने वाला। Kinjal asks, Dr. Niveta, she's asking 90 days के बाद फिर से ऐसी कंडीशंस नहीं होगी ना? ऐसी कंडीशंस तभी होंगी कि आप जब सारा जो भी आपने किया धराए पे पानी फिर जाए, तभी वो वापस होगा। We have to maintain. Yes, Dr. Niveta, I think you're the best person to tell. I would like to answer this question कि you need to understand कि यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं दे रहे, we are also educating you. Educating in the sense what is suitable for you, what is good for you, and whatever you are taking. ऐसा हम नहीं करते कुछ alien diet देते हैं. We are giving the diet which you are already following, but in a different way. मतलब आपको टाइम बताते हैं, हम उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं, मे बी पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइम, एंड किस टाइम पे आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ऑन विच फेज ऑफ योर डाइट, ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच डाइट यू शुड बी टेकिंग। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने आपको प्लान शेयर कर दिया और वी आर नॉट एजुकेटिंग, वी कीप ऑन एजुकेटिंग यू। और कई बार होता है ना, हमारी जो खराब आदतें हैं उन्हें एक दिन में नहीं चेंज किया जा सकता। तो इनिशियल 10 days 20 days मे बी यू विल फील लाइक ये कैसे मैं फॉलो करूं, बट वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग इट फॉर लॉन्ग, यू दिस विल बिकम योर यू कैन से आपका ये आदत बन जाएगी। और फिर आप एक बार अच्छी डाइट जब आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, अब आपको एजुकेशन भी मिल चुकी है कि क्यों अच्छी डाइट फॉलो करनी है, तो दिस विल बिकम योर प्रैक्टिस नाउ। सो जो अवेयरनेस है वो आ जाती है, दिस इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद डाइट प्लान, अलॉन्ग विद योर वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू, सब चीजें आपको मिलती हैं और आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाता है बेसिकली। तो यू विल नॉट फॉल इन द सेम ट्रैप अगेन, है ना किंजल? आपको जब बता दिया गया सामने गड्ढा है मत जाओ, तो अब आप जाओगे जबरदस्ती तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? एंड यस किंजल, बिल्कुल डाइट के लिए रोटी राइस। एक्चुअली द डाइट प्लान दैट इज मेड बाय अ न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब एक तो बहुत हाई फाई टाइप का, मतलब लाइफ में कभी कभी नाम ही नहीं सुने ऐसे ऐसे फूड के होते हैं। नहीं। नथिंग लाइक दैट। योर डाइट, व्हाट यू आर योरसेल्फ कंफर्टेबल विल विद। से कि हाँ जी, यू योरसेल्फ विल से कि मैं पहले भी लेती थी बट
अब मैं ऐसे अभी भी ले रही हूँ, बट नाउ माई बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे. नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, माई स्किन इज ग्लोइंग, माई हेयर इज गुड. दैट वे यू विल फील, स्टार्ट फीलिंग दीज चेंजेस विद इन फ्यू डेज एज वेल. एंड उसके थोड़े दिनों के बाद में आपके एनर्जी लेवल्स, आपके साइकिल्स, आपके कोई मेडिकल इश्यूज अगर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमल मेडिकल इशू टू द मेजर मेडिकल इशू, Yeah. सब चीजों में आपको डिफरेंस दिखने शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम अगर आपकी बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, आपकी और बहुत ज्यादा कारण थे और बहुत टाइम से आप उस रॉन्ग लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स मिनिमम 3 मंथ्स तो चाहिए ना हमें उसे ठीक करने के लिए, या उसे समझाने के लिए, उस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए. या एंड वंस आपको रिजल्ट दिखेंगे ना, आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि हम जाके कुछ ऐसा कर दें कि स्पॉइल हो जाए. वो नहीं होगा. योर राइट. बॉडी विल गेट इनटू दैट हैबिट. And you will get one, I must tell you, Deepika, we ऑसम keep on आयुषी. saying this to our patients as well, कि जैसे हम अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो वन चीट मील भी मिलता है आपको, थोड़ा सा आपको वीक में एक बार बोनांजा भी मिलता है कि चलिए ठीक है, आज आप अपने मन का खाइए. इट्स नॉट लाइक कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी पनिशमेंट फॉर यू एट ऑल. यू विल बी एबल टू एंजॉय योर plans, enjoy your diet. Along with that, you will be able to see the results, and you will be able to enjoy your diets या as well. मजा आना चाहिए. मतलब हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, मतलब दुखी होकर एकदम रो पीट के नहीं थोड़ी नहीं, वो करना है. स्ट्रेस बढ़ मजा जाएगा, हम करके तो करना स्ट्रेस पे है. ही काम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. बिल्कुल. और वही पॉइंट है कि हमें स्ट्रेसफुल थोड़ी करना है हमारा हेल्थ जर्नी. स्ट्रेस तो हटाना है. कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी. I think we all should clap for Ayushi. Ayushi has already paid. Please guide on the. Yes, Ayushi, the team is going to get in touch with you. So, team, please note that Ayushi has already paid. And Oh wow. oh, Kinjal, you booked seat. Lovely, lovely. That's awesome. Kinjal has also paid. Awesome, Kinjal. Congratulations. Nikhat is saying, ma'am, 2018 से PCOD, अब married हूँ, I'm planning baby. Oh, what can be better than, अपने health को इतना optimum बनाओ that you are able to carry a baby in a beautiful and healthy way. Isn't it, Dr. Nivedita? Exactly. If you want to conceive, first of all, first 9 months, your womb is going to be your, a first house of your baby. So you have to take care of your womb, first of all. And to make that healthy and happy place for your child, you need to detox yourself. You need to create a, healthy ovum. Healthy ovum and healthy sperm ही fertilize होके एक healthy baby में convert होता है. And if you already have a medical issue before conceiving, then it is going to be little challenging. तो ध्यान रखो. And you can manage. It's not something which is something जो आपका reverse ही नहीं हो सकता, या balance ही नहीं हो सकता, या maintain ही नहीं हो सकता. And root cause जब आपको पता चल ही गया है, and just by doing some few things, if you can see some result, why not? Yes. Absolutely. And Shania has also registered. Great, Shania. Wow. Thank you so much, all of you. Dil se thank you bol rahe because I see women taking care of themselves. They are taking that step towards their health, and that's like a big thank you from the universe, from Ma Durga during Navratri. You know, Right. she is blessing all of us with great energy and great decisions. Yes, yes. What about others? What about Diwali detox? Diwali detox कौन करना चाहता है? मुझे पता है हम लोग तो बहुत सारी चीजें खाने वाले हैं दिवाली में. Festival season is, yes, definitely. We eat a lot, we meet, and वो पता भी नहीं चलता है हमें कि हमने कितना खा लिया और क्या खा लिया है. Right? So that's okay. That's all right. मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आपको खाना ही नहीं है, बिल्कुल लड्डू बस देख के भाग जाना है. ऐसा नहीं करना है. ऐसा हम टॉर्चर कभी नहीं करेंगे. लाइका में सिर्फ और सिर्फ मजे में होता है. जो भी करना है खुशी खुशी करेंगे हम. एंड दैट इज व्हाई दिस दिवाली डिटॉक्स इज गोइंग टू हेल्प यू. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्स ऑफ जो भी हम लोगों ने कुछ खाया है, विच मींस कोई बात नहीं, अभी आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. हम हैं आपके साथ. बाद में आपको हम डिटॉक्स करवाएंगे एंड वी आर गोइंग टू पुश यू फॉरवर्ड. So Shania and Kinjal and Ayushi. So have you all booked for the 3-month course? Sorry, the program, or have you booked for Diwali detox, or have you booked for both? फिर वो तो मतलब सबसे बढ़िया डिसीजन हो जाएगा. Awesome, Ayushi. Lovely. I think 3 months में भी आपका बहुत बढ़िया डिटॉक्स होने वाला है. It's like you'll be detoxing. It's like,
जब हम पेंटिंग करते हैं ना, हम अपना पैलेट को पहले पुराने कलर्स को धो देते हैं पैलेट से, राइट? फिर हम नए कलर्स डालेंगे. This is exactly what we're going to do. We are putting new colors into our palette of life, healthy colors. Amazing, amazing. Come on, women. Let's all join the gang. And you know what? Nothing works stronger than women coming together and pushing each other towards our goals. Right, Dr. Nivedita, isn't it? And that feels so good, no, when we have women telling us and motivating us to do things well in our life. Exactly. A woman understands a woman better because they generally, we being a female, we experience the same thing in different stages, and we can understand what exactly the other person is saying. Of course, not identically, exactly we are not going to experience the same thing or can experience the same thing, but we can at least, can relate to it. And this is what is more important. So this is something which is आई मस्ट टेल यू कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपको हेल्प मिलती है, एंड फीमेल उनकी इमोशंस ही डिफरेंट होते हैं. अ मेल कैन नॉट नेवर अंडरस्टैंड दैट. Bilkul, bilkul. We will understand, and that is why our entire team is there, like such strong women who are there helping other women. Of course, we have men also in our team, but that's the beauty of it, how we hold each other's hands. Yes, Kinjal, please share your contact number. Anjali is telling us, and team, please take care of all of them who have paid and get in touch with them. Revert. Lovely. Who else? Who else? Because we are now coming to the end of our webinar today. I think this has been such a beautiful. I think it's one of the most interactive audience we've got, Dr. Nivedita, right? It's a lovely questions and like, Exactly. And this is yeah, 1 hour have gone, and it's not yeah, feeling like, we exactly. Actually, we had so practiced much well. more. Yeah, we Yes, had of so much course. more to tell. Lekin your questions were so important. मतलब बहुत, it was so much easier क्योंकि we could understand कि आप समझ रहे हो. You know what's happening there. Exactly. Yeah. बिल्कुल. Awesome, awesome. So I think we can wind up now. लेकिन फिर भी one last big shout out. One, to all the women who have registered, who are now in the LAIQA, team, the women band of strong, the band of strong women of LAIQA who are working towards their health. So congratulations again. And to others also, please quickly register. Okay. And Diwali detox also, that still holds only 500 rupees to block your Diwali detox, 1,000 rupees to block your 3 months plan. All right. Thank you so much, Dr. Nivedita. Thank you for all the knowledge that you've shared. Really, it's been such a wonderful experience for all of us, including me. मुझे भी कितना कुछ सीखने को मिलता है हर बार. Thank you Thank you, so much, Team Deepika. It LAIQA. was wonderful talking to you as well as to our wonderful audience. They have participated so well. Uh, that was very interactive session. Really enjoyed a lot. Yeah, totally enjoyed. Thank you so much, everyone. We are going to wind up now. And all the very best. The people who have enrolled, welcome. And trust me, you're going to be looking at a very different person in the mirror in the next 3 months. Okay. Thank you. Bye. Bye to all strong women. Bye.